Hello guys, how are you all? So in today's video I'm going to do unboxing of Redtape's walking shoes purchased from Myntra. So let's do it right away. So hello everyone, this is how this product I have gotten from Myntra, and in this package we are having the Redtape shoes which I'm going to unbox, and will show you guys how this product is. So I have purchased the Redtape's walking shoes from the Myntra, and this is my very first time I'm purchasing it from the Myntra, and it's because on Amazon it was little expensive. Same shoes was expensive. That's a very big difference I saw. So I thought I should give it a try to Myntra. So मैंने ये परचेज किया है Myntra से, सिर्फ एक रीजन की वजह से कि मुझे लगा कि क्वालिटी वाइज एंड ऑल्सो द डिस्काउंट वाज क्वाइट गुड ऑन द Myntra. I mean 100 रुपीज़ का डिफरेंस था, लेकिन that was quite a good saving for any person who would like to purchase such items. If it is same on the both side, then why not to go on another where I can get on little discount, more discount. So I tried this, and also ये मेरा पहली बार था जब मैं Myntra से कुछ परचेज कर रहा हूँ. So that's why also I tried it to purchase it from Myntra. So we'll unbox this product and we'll see how it is inside it. So let's unbox this box right away. So कुछ इस तरीके से निकल आता है ये प्रोडक्ट Redtape का. Redtape रनिंग कुछ ऑलरेडी ये खुला हुआ ही लग रहा है, बस कुछ इस तरीके से था, जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी मतलब ये निकल रहा है एक्चुअली से. यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है शूज़ की कंपनी की वजह से. लेट्स ओपन दिस अप. ओके, सो दिस इज लाइक दिस. यहाँ पे है इसका इनवॉइस. सो ये शूज़ जो है Redtape का ये शूज़ है. ये टोटल इसकी प्राइस थी 1299 on the Myntra. So I'll keep it aside the invoice and will showcase you the shoes. कुछ इस तरीके से इसका है ये शूज़. तो क्या आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसकी पैकेजिंग हुई है. और now I'm showing you guys the shoes. अच्छा है काफ़ी. ओके, इसके बॉटम साइड पे यहाँ पे Redtape की ब्रांडिंग हुई है. देयर इज़ नो शूज़ नंबर दे हैव गिवन. देयर शुड बी समथिंग एक्चुअली दैट, मतलब नंबर होना चाहिए था वहाँ पे. यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है. ओवरऑल इट्स लुक्स गुड. अब तक तो कुछ डिफेक्ट मुझे इसमें दिखा नहीं है. Redtape की ब्रांडिंग है. इसका ये जो पोर्शन होता है इतना भी सॉफ्ट नहीं रखा है, बहुत ही ओके सी क्वालिटी लगी मुझे ये वाले पोर्शन की, जो कि आप हमेशा कुशन होता है हमेशा किसी भी शूज़ में देखे तो, बट इसमें इतना कुशन नहीं लग रहा मुझे. ओके, इसका इनसाइड पार्ट कुछ इस तरीके का है. Redtape ड्रिफ्ट परफॉर्मेंस. साइड पे तो ऐसे वॉकिंग शूज़ बताया गया है, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इट्स लुक लाइक रनिंग शूज़. अंदर काफ़ी ये अंदर का पोर्शन काफ़ी अच्छा है. इसमें जो सोल डाला हुआ है इन्होंने, ये वाला पार्ट ब्लू कलर का, वो काफ़ी अच्छा है. So this one is also fine. I will wear it and I will show you guys how does it looks after wearing it. Lace is quite okay.
इसकी लेस तो ऐसे ठीक ठाक ही है, there is nothing that major difference I would say there is as compared to the shoes. लेकिन ये वाला काफ़ी मतलब बहुत ही पतला है, ये वाला शूज कुशन बहुत ही कम है इसमें. From that sole it looks good. Let's wear it and check it out how it looks. So now while wearing it, I am facing little difficulties. Initial phase. Okay, now it's properly gone, and it does look like this. It looks quite good actually, not bad I will say. ओके सो मैंने दोनों शूज़ वेयर पहन लिए हैं और कुछ इस तरीके से ये दोनों के दोनों दिखते हैं. एक्चुअली दिखने में तो क्वाइट अच्छे ही लगे मुझे सो फार. और इसे पहनने में कुछ तकलीफ तो नहीं लग रही है, उल्टा काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मुझे इसमें. एंड डिज़ाइन वाइज तो ठीक ठाक ही है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन इसका ये कुछ खास नहीं लग रहा है. ये वाला फट सकता है यहाँ से. आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई थिंक. ये जल्दी ख़राब हो सकता है ये वाला पार्ट. और दिस पार्ट विल बी द पार्ट आई विल से कि ये मुझे क्वालिटी वाइज ज़्यादा मतलब इतना भी अच्छा नहीं लगा है. और इसके बारे में मुझे लगता है कि ये जल्दी ख़राब हो सकता है. इट विल गेट डैमेज अर्ली. अगर कुछ किसी भी तरह से नुकीली चीज़ से टकरा जाता है तो फट सकता है जल्दी से जल्दी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस. आई होप यू लाइक्ड दिस अनबॉक्सिंग वीडियो. Thanks for watching it, and don't forget to hit the like button for this video if you liked it, and subscribe the channel. Thank you so much.